हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन का जो थर्ड है वो है हमारा 125 रेज टू द पावर माइनस 1/3. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 into 5 into 5 raised to the power 1/3 raised to the power 1/3 and that one is 5 cube power 1/3 5 क्यूब इंटू 1/3 3 कट गया तो हमारे पास में आया केवल 5. इस टाइप से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा. एक लॉ और भी है एक्सपोनेंट का विच आई विल टेल यू दैट a upon b raised to the power m, that is a power m upon b power m, that is discussed here. And also if a upon b raised to the power minus m, this means this denominator will go to numerator side and numerator will go to denominator side and you will get the positive power. नेगेटिव पावर हटाना है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाना तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाता है. तो हमारे पास जो भी है वो ये रहेगा. क्वेश्चन हमारा जो 2 है उसमें एक नेगेटिव का भी है. क्वेश्चन नंबर 2 का 4 उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार 2 का 2 देख लेते हैं. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सपोनेंट का याद करना है आपको लॉ और ये सॉल्व हो जाएगा. 32 रेज टू द पावर 2/5 32 raised to the power 2/5. In this question we can write it, take bracket first and we can write 32 means what? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32. We take the prime factorization of the given number. After that we will apply it like this: 2 raised to the power 5 raised to the power 2/5 once again, and if you will see the formula you will get a raised to the power m power n is equal to a raised to the power m into n. That the law indicated in second. Now also if you will solve it, 2 raised to the power 5 into 2/5, 5 will be cancelled and you will get 2 raised to the power 2, that is 4 answer. In this way you can solve the remaining of the questions, and for further explanation we will move to the next question. That one is of negative power, and if you will see that the question 125 raised to the power minus 1/5 or 1/3 1/3. Actually the font is very small so it is not clear from this side. If you will go through this question again you will get the same, but if you want to solve it just go 5 raised to the power 3 raised to the power 1/3, that is in negative. Negative positive doesn't matter, you have to only simplify it. 5 raised to the power 3 into minus 1/3, this will be cancelled and you will get 5 raised to the power minus 1. You know 1 is hidden in the denominator of every number, that is the integer, and if you will solve this means wants to change the power into positive number, you have to just go it 1/5 and this is your required answer. So furtherly we will proceed to question number 3. That one is simplification. Means up to here you are solving the question one by one and now you will get the mixed one. Means the previous questions and the next questions together with the with some operational signs and something else. Now see 2 raised to the power 2/3, question number 3rd 1 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5. Suppose this question is like this, and how we will solve? Now here the base is same and the power is different, so in this condition we will follow a rule that is explained in law of exponent 4th point. So if you will solve, then 2 raised to the power what this minus this base is same, power is different, so you will go to exponent 1, not 5, not 4. So you will get
2/3 इन प्लस 1/5। चूंकि अगर बेस हमारा सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो हम लोग उसको ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में अगर हो तो यहां पर हो जाएगा 2⁻5 और 3 का एलसीएम ले लें तो 15, और यहां पर हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 3 into 1 3. You will get 2⁻13/15. This will be the answer. Next question is 1/3³ एक्चुअली होता क्या है कि 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसका किसी का भी पावर कर दो वो आंसर 1 ही होता है। 1 का पावर 4 करो तो भी 1, 1 का पावर 100 करो तो भी 1, 1 का पावर 10,000 करो तो भी 1 होता है। यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर हम इसको क्यूब कर दें तो भी इसके रियल वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 1/3 का पावर 3 करेंगे, फिर इसका पावर 7 करेंगे। क्यों? अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर क्या पढ़े थे कि अगर ये दोनों का पावर अगर यहां से सेम हो जाए, देखो सेम ही किए हैं हम, a का पावर m अपॉन a का पावर अगर m हो जाए नीचे में तो यहाँ पर a भी अपॉन पावर m होता है, तो सेम करने की कोशिश की है। फिर इन दोनों का पावर अलग है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट 7 into 3 21. You will get the answer like this. Now see question number fourth one. Fourth one is what? फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। अगर ऐसा है तो हमारे पास में ये देखो बेस दोनों का अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहां हम लोग सिंपली फॉलो करेंगे 7 into 8 and raised to the power 1/2, indicating the formula also that if a power m into b power m, then we will get a into b power m. We will explain that thing here also. You will get 56/1/2. So in this way, dear students, we have completed our chapter 1, that is number system, in which we have studied so many parts. I am just making this video in order to make you more clear, so that your concepts, your things must go on, your study must go on. In spite there is not a holiday of a study, but it's a holiday of regular joining of the school. I hope you like my lecture and waiting for my next content and next chapter. So just like, share, comment and don't forget to subscribe. घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।